जय श्री राम माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं मेरे विचारों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं और ये विचार हिंसा अहिंसा की बातों का है। आज के परिप्रेक्ष्य में करंट अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, इसके अंदर हिंसा और अहिंसा का किस तरह से हम पर असर हो रहा है। क्या कोई ऐसे समझता है कि हमारे पारिवारिक समस्या जो होती है और हमारी किसी और से व्यक्तिगत समस्या हो या फिर किसी एक ग्रुप की किसी एक ग्रुप से समस्या हो, किसी एक दल की दूसरे दल से समस्या हो, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो या कोई गहरी समस्या हो किसी भी बात की, या तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कोई समस्या हो, तो क्या हम मारामारी पर उतारू हो जाएंगे? विल देयर बी ए वायलेंट रिएक्शन टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ इंडिफरेंसेस? ये आपसी मतभेदों को सुलझाने का इसी का एक ऐसा ही तरीका हो सकता है क्या? आमतौर पर सुना जाता है कि किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को कुछ कर दिया नुकसान वायलेंटली, और किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि किसी के जीवन की प्रगति मात्र रुक जाए। चेकिंग ऑफ द पीसफुल प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ is obstructed by certain violent acts in the society. That happens, and we are every day reading such news all over us and around us. तो आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी अभी जो मैंने सुना और जिसके लिए मेरे मन में एक विचार आया, और वो था एक कैराने के सांसद अभी जो हाल में हैं, वो किसी को कह रहे थे, ग्रुप को, कि भाई ये बीजेपी वालों से उनके साथ दाना पानी धंधा परचेज करना उनकी दुकानों से, डू नॉट हैव एनी कमर्शियल और एनी अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद दिस पीपल विद इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, देन दे विल अंडरस्टैंड हाउ टू बिहेव, और इनको हमसे किस तरह से हमारे साथ व्यवहार करना चाहिए समझ में आ जाएगा, हम इनसे निपट इसी तरह से लेंगे। तो आप देखिए कि एक सांसद होते हुए इस आदमी ने कहा कि उसकी विधानसभा क्षेत्र में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी वालों से आप लेन देन का कमर्शियल रिश्ता बंद कर डालो, इनका धंधा पानी बंद हो जाएगा, तो ये अपने आप ही समझ जाएंगे। अब ये बताओ कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लिया और उसके बाद कहा कि हम हमारे संविधान की रक्षा करेंगे। रक्षा यानी क्या? राइट टू बिजनेस एंड प्रोफेशन सभी का इक्वल होता है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो किसी एक समुदाय को कि किसी और समुदाय के यानी कि पॉलिटिकल पार्टी वालों से आप कमर्शियल रिलेशनशिप बंद कर दो, उनके साथ कोई बिजनेस का व्यवहार मत रखो? ये क्या बात हो गई भाई? आपने मेजॉरिटी कम्युनिटी को बोल दिया, मेजॉरिटी जो आपके साथ है उनसे बोल दिया कि जाओ हम इनसे बिजनेस मत करो। क्या आप एक संवैधानिक पद पर रहते हुए एज ए MLA कैन यू से दिस एट ऑल? दैट इज वायलेटिव ऑफ द फंडामेंटल राइट, एंड यू आर actually encouraging a violent way and forcibly checking the progress of those people commercially in business, that in a way not allowed under the constitution which you have taken oath to protect. अब जब ऐसा होता है तब हमारे कोर्टों का यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों का रवैया बड़ा अजीब सा है इसके केस लॉस पढ़ने के बाद कि रिट ऑफ को वारंटू कैन नॉट बी इश्यूड।
Only in exceptional cases can be issued. अब एक साधारण नागरिक कैराना का जाए हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में और कह दे अंडर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कि ये जो सांसद है अपने ओथ का भंग कर रहा है, तो वो सांसद होने के लायक नहीं है। तो क्या ऐसा एक्शन नहीं लिया जा सकता? लिया जा सकता है। तो ये जो वायलेंट प्रोपेगेंडा होता है किसी एक ग्रुप का किसी एक ग्रुप के खिलाफ, और वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लेकर सांसद बना हुआ है, तो इस पर से मुझे विचार आया कि कब तक ऐसा चलेगा देश में। देखो, यूं था महाभारत में काफी वायलेंस हुआ। एक फैमिली में, माने कि वो फैमिली मात्र नहीं था, दे वर पावरफुल किंग्स एंड प्रिंस थे वो सब, और इस तरफ 5 प्रिंस और उस तरफ 100 प्रिंस, वहां धृतराष्ट्र और यहां पांडु के पुत्र, और उन्होंने द्यूत खेला। द्यूत में बेईमानी की, बेईमानी कर कर कुछ ऐसे शर्तें लगाई, उस ऐसी शर्तों के लगाते हुए उन्होंने 13 साल पांडवों को वनवास में भेज दिया। 13 साल पांडवों ने अपनी मेहनत की, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उन्होंने अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया, पर्सनल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। फिर अर्जुन ने कई अस्त्रों को अपने मतलब कि कब्जे में ले लिया, किन्हीं देवताओं के पास जाकर उनसे लड़ाई कर कर और उनको खुश कर कर। तो इस तरह से उन्होंने तैयारी कर ली थी युद्ध करने की। 13 साल के बाद जब युद्ध की परिस्थिति आई, तब युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, ये युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें पीसफुली इसको सुलझाना चाहिए। तो उसकी बात भीम ने मान ली, भीम के बाद अर्जुन ने मान ली, अर्जुन के बाद नकुल ने मान ली, सहदेव ने नहीं मानी। सहदेव ने कहा कि नहीं, युद्ध तो करना ही है, और द्रौपदी ने भी नहीं मानी। पर फिर भी कृष्ण ने भी मान ली। तो ये लोग गए, कृष्ण को भेजा दूत बनाकर और बोला कि ये पीसफुली इसको सुलझा दे। वहां जाकर कई ऐसी बातें कृष्ण ने सभा में सारे कौरवों के साथ भीष्म पितामह के समक्ष, धृतराष्ट्र के समक्ष इन लोगों से कही कि इस तरह से इसको सुलझा दो, आधा राज्य दे ही दो। इसमें देयर वाज नो, आई मीन द ब्रीच ऑफ द कंडीशंस ऑफ 13 years ऑफ वनवास, और टेक्निकली सब समझाते हुए भी नहीं माने। तो बोला आधा ने तो 1/4 राज्य दे दो, वो भी नहीं। तो फिर इतना राज्य दे दो, वो भी नहीं। तो फिर भैया 5 गांव ही दे दो। 5 गांव भी नहीं देंगे, बोले। एक सुई की नोक पर जितनी जमीन आती है वो भी देने से मना कर दिया कौरवों ने। तब जाकर युद्ध हुआ, और वहां जब युद्ध होता था तो एक ऐसी जगह पे होता था जहां आम जनता को कोई तकलीफ न हो। 18 दिन में युद्ध समाप्त भी हो गया और इसमें पांडवों की विजय भी हो गई। तो युद्ध अनिवार्य तो था, पर उसे यह भी अनिवार्य था कि युद्ध ना हो, इसलिए पीस का समझौता करके इसे टालने की कोशिश भरपूर की गई कृष्ण की ओर से, पांडवों की ओर से। जो होनी थी सो हुई, पर हिंसा वॉज नॉट immediate solution in any type of war in the past. और हिंसा को टालने की राम जी ने भी कोशिश की थी, हनुमान को दूत बना के भेजा था। हनुमान का रावण ने नहीं माना, तो फिर अंगद को भेजा। अंगद को भी रावण ने अनाप शनाप कहकर ठुकरा दिया था उसकी पीस प्रपोजल को, और फिर युद्ध हुआ। तो राम जी भी रावण को मारना नहीं चाहते थे, युद्ध करना नहीं चाहते थे। कितना भी गलत आदमी हो, राक्षस तो था ही, फिर भी। तो इस तरह से अहिंसा को भारत में एक एसेंशियल
माना है किसी भी स्तर पर, व्यक्तिगत, सामाजिक या पॉलिटिकल स्तर पर या फिर इकोनॉमिक स्तर पर। इसे अनावश्यक माना है हिंसा को। इस तरह से ये हिंसा अहिंसा का जो हमारे में जो फाउंडेशन है कल्चर में, वो इस तरह का था। अब यूं हुआ कि पार्टीशन के समय, जब भारत का पार्टीशन हुआ, उस समय बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी। अब इस हिंसा को टालने के लिए गांधी जी ने कोशिश की थी, पर गांधी जी का यह मानना था कि हिंदू लोग मान लेते हैं, तो जहां हिंदू बहुसंख्यक थे जो मुसलमानों पर बंगाल में अत्याचार कर रहे थे, वहां जाकर उन्होंने इसको सत्याग्रह करके रोका। पटेल ने और नेहरू ने भी मान लिया और ये सब हिंसा रुक गई वहां पर। मगर कुछ लोगों का ये मानना था कि अगर गांधी जी यही कर सकते हैं तो क्यों ना उस तरफ पंजाब में भी हिंसा को पाकिस्तान में जाकर रोकते। तो ये तो गांधी जी ने नहीं किया, क्योंकि गांधी जी पार्टीशन के बाद भारत का हिस्सा थे, तो वह भारत के लोगों के लिए अहिंसा का धर्म अपना रहे थे, पाकिस्तानियों के लिए तो नहीं। उसके लिए जो भी जवाब देना था वो दे सकती थी भारत की सरकार उस वक्त, और दे भी रही थी। तो ये हो रहा था। अब तब जो हिंसा हो गई सो हो गई, और बाद में किसी एक ने सोचा कि ये गलत हुआ, तो उसने बंदूक की गोली से उनकी हत्या कर दी। तो आजकल के समय में हम लोग सुन रहे हैं कि बहुत से लोग इस बात को बड़ा चढ़ाकर कहते हैं कि नहीं, ठीक हुआ, बहुत अच्छा किया, जिसने भी किया, करना ही था, होना ही था, और इसके लिए जो होगा इतिहास के समय पर तो वे वहां नहीं थे, मगर आज 50-100-75 वर्ष के बाद ये लोग कहते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं, दे एनालाइज द हिस्ट्री and they find fault with someone and they find someone to be very right in committing violence. This is very, very unfair, because you are not standing at that point of time. You are away and you are looking with a particular viewpoint only, because you are looking at history. And most of the time, history has to be appreciated in both the ways. But you cannot condemn someone's good acts in that time. And a bad act is a bad act. You cannot put an end to something which is intrinsically good by taking gun in your hand. That is absolutely reprehensible, or it has to be denounced in every possible manner. But today we find very learned people taking sides towards the violent acts. History has to be looked upon to understand how the present day generation and the society and the political system should progress for the good, common good of the people, but not taking the hints and tricks from the history to create another violent society. No need for that. And this violence is taken up by such people in modern day, current time, because they do not have patience. They do not have patience to deal with certain irregularities or the shortcomings in the law and order or political system or economic system, and therefore they want quick solutions, and they take up violent ways. You can see the violent way is this: when you obstruct the progress of a human being or the society in any way possible, by blocking roads or breaking public property or disrupting the normal life, or in such other manners, disrupting the economic activity of the nation
or of a particular place, it is certainly violence. And that is what people are doing nowadays, to find quick solutions to everything in the society which they think that it is improper. Maybe it is certainly improper, but there are means to do that. And all that has to be learnt from our freedom struggle. But certainly we are not prepared for that. We have changed a lot. We do not know how the freedom struggle took place in a non-violent manner. And that non-violent manner is unimaginable in the present-day society, which is a victim to the streaming media and information on every instrument or TV or the cell phone or newspaper or whatever it is. That is giving a wrong impression on the minds of people. And they are having so much information. So much information confuses them, and they do not know how to deal with situations in life. And another aspect is most of the population is worried about their daily living, bread and butter. It is impossible to expect them to actually take up the non-violent way. And there is a few people or small groups of people, means relatively small groups, and the political groups, which take up violent methods. And there is no one to oppose it. And the courts, which have to take cognizance of these things, have been very docile in taking these things into their hands and calling out that something unfair is happening in the society. But that is not happening, and therefore the silent majority, which is silently watching the anarchy around in the society. And you can see the political class has been very selfish, self-centered. They only want that they will win another elections, and for that, the moment they win an election, they start preparing to win the next election. Money has played a large role, and that money has spoiled the peaceful society in that many ways. It is often seen that even in the individual level, when someone has to settle the scores or their differences, they want to solve their problems with another, they resort to cheating, fraud, mistrust, etc. in many ways possible. And that is how they commit crimes, civil crimes, I would say civil crimes, civil wrongs, and criminal acts to get what they want against another person. That is also happening, and in a large way. Many of the court cases which we see today are a result of such acts, which are, in a way, very violent. And when I say अहिंसात्मक होना चाहिए, हिंसात्मक नहीं, तो this ahimsa is never practiced in personal life, because people are not equipped in all the possible manner to face the adverse situations in life. Therefore, violence is very natural. Violent ways are very natural. Ahimsa is not a natural. It is unnatural. Now it has become unnatural. That should have been practiced is not being practiced, not cared for. This is where the society is going towards the violent way. The national, international conflicts all over the world, you can see, they are very, very violent. Many of the countries, nations are divided in such a way, irreparably divided. And
the violence continues everywhere, Colombia or even in South American countries and in African countries, in West Asian countries, in the Asian countries like Kazakhstan, Uzbekistan or Ukraine, etc. Afghanistan is of course tattered, and this is the result of violence. Well, because we forgot how to deal with ourselves in a non-violent manner. This is what the society has become. The modern day cartoons and the games which the children play on their gadgets are all violent, absolutely violent. The movies, the series like Heist and Hannah and all this, violence, absolutely violence. They show violence is the only solution, even to bring good to the society. Violence is the solution. Violence is in a way arresting the progressive life of human beings, the peaceful progressive life. Recently we saw that the Prime Minister was held hostage kind of way on the middle of a bridge by people who had blocked his way. Prime Minister's way was blocked. See the extent of violent people around us. And that violence in front and the gaze of the government and the police of that state. How can that happen? And now we take it, it's okay, fine, no problem, no one was hurt. It's not that. You indulge in violent act by blocking someone's way and Prime Minister's way. It is harm caused to the Prime Minister. When he wants to perform certain duties, he is not allowed to do that. That is it. Another aspect of violence is that when you disturb the living, a peaceful living of your neighbor, that is violence. Isn't it? When you interfere in his peaceful living, you block the roads whenever you like, you blare up sound in the middle of the night, early morning, for right or wrong, that's not good. To disturb someone's sleep, that's violence. People take it as their right to do whatever they are doing in the name of religion, in the name of party work, in the name of groups' endeavors of whatever kind that is, to disturb the normal life around the community. This DNA of violence has become cancerous in a way in this society, in modern day society, everywhere around the earth. It is cancerous, such a way that it's progressing towards the destruction of the peaceful progress of humanity. Environmental violence, that is also there. How we degrade the environment in many ways possible, all the ways possible. And the United Nations has never been effective in any way possible to diffuse the conflicts in the world around. Everyone has got their personal interest. The Security Council members, they veto it each time, and they do not get to sense for a common ground to promote peaceful world order in any manner whatsoever. Till today it has not happened. After the World War, that was the great idea of the nations to see that conflicts as such as World War does not happen again. But it is not that. We are having 1,000 conflicts around the world for whatever reasons it is, and it is improper. People are starving,
and they are not provided food because there are political differences. And that is what has happened to the children of the world who do not get proper education, proper food, proper shelter, proper medication, proper health services, and all because the nations are divided. Political divisions. And on individual level also, there are so many divisions. And the group divisions, society is divided in 1,000 ways because of the violent thought. Because they do not see non-violence as a solution. And they believe that law and order can take proper measures to solve all the problems. That we have never seen at all. No. Police interference or the legal interference, lawful interference could not solve any problem. No amount of law can prevent violence of this kind, which I have just described. The violence of this kind. They cannot prevent violence. Non-violence cannot be promoted by law alone or even with law. It should become the character of the society. And character of the society is depleting because what the children watch, what the adult watch, hear, perceive, that is what's happening. And all the movies, whatever you call them, everywhere, this is the way. Promote violence, show violence, show that violence alone is the cure for everything. Therefore, we are moving towards disaster. Understand this, disaster. Therefore, ultimately I will come to the point that there is a need to educate the people about those qualities, those virtues and values which are pronounced in Bhagavad Gita by Lord Krishna in the 16th chapter and, of course, throughout the Gita. But spiritual reading, that is what they call it, no one likes it. It's bland for them. Bland for the mind, bland. No one likes bland food. No one likes bland spiritual thought. There is where violence creeps in. Non-violence evaporates, goes away from your minds. Therefore, my dear friends, ponder upon this. These are my just today's thoughts. It just came to me. Thank you for listening. Jai Hind. Jai Bharat Mata Ki. Jai Siya Ram.